Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on Fortnite Current Affair, also known as FCA. This is Fortnite 2. Every month we have two Fortnite. The first Fortnite is being released on second Sunday and the second Fortnite is being released on fourth Sunday. Right? So we'll cover 10 most important news that were important for the entire Fortnite. And the coverage of this initiative include three aspects. The first is the Hindu, the other is the Indian Express, and the last is the PIB. So the news that we are going to discuss would be from all these three. So let's get started with today's topic list. So these are the list, basically the 10 news that I'll be discussing with you. You can pause this video, you can read the entire topic. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video helpful, do not forget to press a like button. So the first news is RBI proposes new law to regulate the digital lending. We'll see the detail how the digital lending is going to be the game changer and what RBI regulation is going to be there. So the first and foremost that the working group has been set up by the Reserve Bank of India and they have proposed a stringent norms for the digital lenders because we have seen many fraud happening in terms of lending. सो आरबीआई ये सारी चीज़ों को एक डिजिटली मोड से करने की कोशिश कर रही है दैट इंक्लूड अ सेपरेट लेजिस्लेशंस टू प्रिवेंट एनी इलीगल डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री. So this is a right step in right direction and very soon everything would be under the ambit of Reserve Bank of India. अभी भी आरबीआई के अंदर है बट इसकी फंक्शनिंग को और इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. Now, according to the working group committee, digital lending apps should be subject to verification process by a nodal agencies to be set up by the consultations of जो consultating bodies होंगे या जो stakeholders हैं उनसे consult करके बनाई जाएगी. The panel was set up in the backdrop of business conduct and customer के जो protection है उस concern को ध्यान में रख करके ये सारी चीजें की गई है and the RBI in its intervention warned that जो digital lending की activities है वो और ज़्यादा strengthen हो comprehensive. So what the working group has said that these are some of the key recommendation which is again very important for your mains examination also. Mains में अगर आप questions लिखेंगे तो ये mains के लिए भी काफ़ी ज़्यादा important होंगे. So the first is set up a nodal agency and self-regulatory organization जिसको SRO भी कहा गया है, self-regulatory organization bring laws to prevent illegal lending activities. The nodal agencies would be set to verify the digital lending, developing a baseline technology that would ensure compliances conditions offering on the digital lending solution, or data collection only with the prior consent with the borrower and verifiable audits. Or last है upfront disclosures of annualized cost of loan, right? So these were some of the important recommendations given by the working group committee which was set by the Reserve Bank of India. Now दूसरी न्यूज़ है केसरे हिंद द अरुणाचल प्रदेश state butterfly. This is something which is important for the prelims examination. So recently the government of Arunachal Pradesh has approved Kesare Hind as a state butterfly, right? And the government has renamed the Environment and Forest Ministries as the Environment, Forest and Climate Change Department to provide greater impetus on climate change response और एक institutional arrangement करने के लिए ministries ने अपने names में revamp की उनको change किया. So what is this butterfly all about? Kesare Hind is also known as Tinopelis imperialis. This literally means the emperor of India. So ये meaning भी आपको याद रखना है कई बार in many other competitive examination they can ask you. So the butterfly is largely the bright and large in size. You can see this is the actual image. Vivid color is already there, green reflecting with orange and brown, and the size is pretty bigger compared to any other butterfly. This is protected under the Schedule 2 of Wildlife Protection Act of 1972, and the insect with basically 90 to 120 millimeter wingspan is found in the eastern Himalaya region also. And the butterfly also flutter with Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, and southern China. So these are some of the region where this butterfly is found. The third news, that is Center proposed new body to river linkage projects. This is again something important both for mains and prelims. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने एक्सक्लूसिव एक प्रोजेक्ट बनाई है जहाँ पे लिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स को के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, एक एक्सक्लूसिव बॉडी होगी. And the proposal for the consultation that is would be known, the constitution of the body would be named as National Interlink River Authority, also known as NERA.
तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. So they will deliberate the meeting committee of the interlinking, and this would be chaired by the Ministry of Jal Shakti. So बात करें नीरा की, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी. दिस विल कोऑर्डिनेट द नेबरिंग कंट्रीज, खास करके ऐसे स्टेट्स जो हैं जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ उनके बॉर्डर है, उन स्टेट्स के साथ. डिपार्टमेंट विल ऑल्सो हैव द पावर टू इश्यूज द एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेज, लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स, और कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ को देखना और उसको लीगल एस्पेक्ट्स को चेक करना. It will further make arrangements for generating up the funds and internally and externally. Now some of the river project which is there, जो interlinkages की project की बात करें, and these 6 project is also important for your map work, right? Map work के point of view से ये सारी चीजें काफी important है. So first is Ken Betwa, then again is Daman Ganga Pinjan, पार तापी नर्मदा, मानस संकोस, तीस्ता गंगा एंड महानदी गोदावरी और गोदावरी कावेरी. तो ये कुछ ऐसे साइट्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट साइट्स दैट इज ऑन गोइंग, और इस पर भी फंक्शन से न्यूज़ काफ़ी आई है. सो मेक श्योर आप इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर के और किस लोकेशन में ये एक्चुअली है वो ज़रूर देख लें. Ken Betwa is the India's first such project. With regard to the Peninsular River, Center has chosen गोदावरी एंड कावेरी टू लिंक अर्लियर, और इससे पहले महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार रिवर को भी कनेक्ट किया गया. Now UN Tourism honor Weavers Hub for the Pochampalli. We'll see this is basically a type of textile, or you can see the article that is being manufactured there. So Telangana Pochampalli village was selected as one of the best tourism village by the United Nations Tourism Organization, और UNTO ने कहा है, UNWTO, that the village would be a global initiative where the villages would have preserved their culture, जहाँ पे जो पुराने ट्रेडिशन है उसको अभी भी प्रिजर्व किया गया है. एंड इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड सेफगार्ड टू द बायोडाइवर्सिटी. Now the prestigious award would be given on occasion of 24th century, जब खास करके December 2 में ये चीज़ें होनी है, UNWTO अनाउंस करेगी. The news would also appear in Hindu. We'll discuss that also at that point of time. पोचमपल्ली एक फैब्रिक है that is also known for its complex color and geometric designs. Pochampalli is a village 50 km from Hyderabad, in an artisan village. It is known for its exceptional ikat weavers and textures, right? Now UNWTO के बारे में कुछ बेसिक्स आपके लिए जानना ज़रूरी है. So this is a United Nations specialized agency that is interested with the promotion of responsible, sustainable, universal and accessible tourism. और इसकी जो हेडक्वार्टर है which is there in Madrid in Spain, it encourage the implementations of global code of ethics in tourism to maximize the contributions, जहाँ पे socio-economic development as well as the same time ये minimize करती है किसी भी negative impact, possibility of impacting the negative impacts. So at the same time इसकी पूरी कोशिश होती है कि किस तरह से वहाँ के region जो local people है, जो diversity है, उनको encourage किया जाए. Now cabinet okay schemes for road and telecom activity. So recently the cabinet has approved and extended the scheme to improve road and telecom connectivity in village area. Basically जो भी tribal affected areas हैं, left wing extremist affected areas हैं, उनको उनके वहाँ पे connectivity improve की जाएगी. At the same time जो road की construction है वो भी पहले से और बेहतर की जाएगी. As per the decision, 7,287 villages were part of the aspirational district program in Andhra Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra and Odisha. So these are some of the specific state where government would be focusing upon. And जो project की पूरी cost है, that is 6,466, that is expected to increase in 18 months. The village will get 4G connectivity and will able to access the governance facilities, because we know बहुत सारे ऐसे states हैं that are still converted their entire platform of government grievances, citizen charters की अगर बात करें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं. सो दिस इज इन लाइट ऑफ दैट कि सारी चीज़ों को वापस से कनेक्टिविटी में जोड़ा जा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव की जा रही है. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कम अप विथ मोर अदर इनिशिएटिव, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट है. इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी अलाइन की हुई है. Now continuations of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. This is the project that is a game changer in terms of building the road infrastructure. So this would be continued till September 2022. और जितने भी unfinished road हैं उनको complete किया जाएगा. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the road connectivity project for the left wing extremist area till March 2023.
Now, what is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana? This was actually launched in 2000, and now it is under the Ministry of Rural Development. Along with it, it is implemented with the state concern. Union government bear 90% of the project cost. कुछ स्पेसिफिक जगह पे या तो नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे या पे हिमालयन स्टेट पे जो सेंट्रल की कॉन्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो 90% है, बाकी के जगहों पे नॉर्मल स्टेट्स में 60% की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Now, CBI ED can now have a 5-year tenure. An ordinance was passed recently by the President, where this promulgation of ordinance envisaged that ये जो tenure है वो 2 साल से बढ़ा के 5 साल की जाएगी. So the Chief of the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation now can have a tenure of 5 years. Now the CBI director was बेसिकली जो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके बाद इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी सीबीआई की, उसके कुछ प्रोविजंस में चेंज की जाएगी. एंड दिस चेंजेस ऑफ 1946. और अगर सीवीसी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 में चेंजेस लाई जाएगी, जहाँ पे ईडी की जो डायरेक्टर की पोस्ट है उसकी टेन्योर 5 साल तक की जा सकती है. Now CBI की बात करें, basics about the CBI, the premier investigation police agency in our country. It functions under the superintendence and the Department of Personnel, Ministry and Pension Grievances of the Government of India. It acts as an investigation for the offenders under the Prevention of Corruption Act. It superintends West with the Central Vigilance Commission. And it is a nodal police agency in which it coordinates with the investigation on behalf of international member countries. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर बात करें, ये इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द लॉ ऑफ फेबा, दैट इज नॉन एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. And enforcement directorate is administered by the Department of Revenue, which is working directly under the Ministry of Finance. And the Director General of Economic Affairs है, जिसको enforcement directorate भी कहा जाता है, is a law forming agency that is responsible for having a law fighting against the economic crime in a country. Indigenous chopper drone handed over to armed forces. This is in light of the advancement that we can see in the armed forces. So to boost the state of art technology, Prime Minister ने recently कुछ drones, खास करके जो drones की variety है, that is Switch 1.0 UAV, which was developed by the Ideas Forge technology, and MR-20. This is developed by RAP Ambir. It's India's Defense Forces को राष्ट्रीय रक्षा संपन्न पर्व के दौरान दिया गया, right? So the India's drone industry, which is working towards developing the cutting edge solution, most advanced technological upgraded की तरफ आगे बढ़ने की, जहाँ पे हेलीकॉप्टर और यूएवी दी जा रही है. Now Switch 1.0 की अगर बात करें, they're having an endurance with approximately 90 minutes. ये ड्रोन है जो कि 90 मिनट्स तक के कैपेसिटी टाइम तक सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ कर सकती है, और ये उस जगह पे मदद करेगी वेयर वी हैव हाई एल्टीट्यूड रीजन, द नाइट सर्वेलेंस विच इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेज. सो दिस वुड बी गिविंग सॉल्यूशंस टू द बॉर्डर एरियाज. Now MR-20 Hexa chopper drone. This is a chopper drone having a capacity to load a ferry of 20 kilo, and it can be used to deliver the essential item जो emergency medical aids हैं, ammunitions हैं, weapons for their troops at the heightened area would be provided by MR-20 Hexa helicopter drones. Now El Salvador to become build the first Bitcoin city, and this is again important for your prelims and many other competitive examination. So after becoming the world first country to adopt Bitcoin as a legal tender, अब El Salvador ने अनाउंस किया है that this would be the first Bitcoin city. तो आप El Salvador की एक बार मैप देख लें कहाँ पे ये किस जगह पे लाई करती है. This map will become also important. The president of El Salvador said that the Bitcoin city was planned initially for the Bitcoin bond. इसकी जो development है Bitcoin bond से doubling down the country bet on the cryptocurrency would be done. Now, in presented the measure, the way to boost the economic development, जहाँ पे jobs even, but El Salvador has been divided by this move. बहुत सारे ओपिनियन जो वहाँ के कंट्रीज़ के अलग अलग कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया. इट मीन्स अब जब ये इम्प्लीमेंट होगी, वेर एवर पॉसिबल द पीपल वुड बी ऑब्लाइज टू टेक द पेमेंट बाय डिजिटल कॉइन्स और बिटकॉइन्स. एंड बिटकॉइन इज कॉन्ट्रोवर्शियल एज पार्ट ऑफ इट एंड इट कैन फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली, बिकॉज अभी रिसेंट में जब आरबीआई ने भी कमेटी बनाई थी तो इंटरनेशनली ये देखा गया कि बिटकॉइंस की वैल्यू भी गिरी है.
सो व्हाट इज बिटकॉइन? दिस वाज फर्स्ट, अगर बिटकॉइन की बात करें जो डेवलपमेंट या वाइट पेपर की बात करें, दिस वाज रिलीज्ड बाय द सटोशी नाकामोटो, राइट? So he was the one who is behind this bitcoins, and he described cryptocurrency, a virtual currency, a digital currency, is a type of money that is completely virtual. It is like an online version of cash, and you can use it to buy product services, but not many shops accept the Bitcoin in some countries, right? तो सतोशी नामक नाकामोटो ने इसको डिस्कवर किया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Now, Defense Acquisition Council approved AK-203, the deal with Russia. This is the advanced version of AK series. You must be aware of AK-47 and AK-56, which was previously used by the armed forces. So recently, the Defense Acquisition Council have approved the long pending deal for the manufacturing of 6.71 lakh of AK-203 assault rifle. और ये डिसीजन उस समय ली गई है जब यूएस, खास करके रशिया के जो प्रेसिडेंट है, इज विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट मंथ, एंड बोथ कंट्री होल्ड द इनॉग्रल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. अनदर की प्रोग्रेस इज दिस दैट जो शॉर्ट रेंज अलगा एसवी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है, उसके बारे में भी बात होनी है, बट स्टिल वी डू नॉट हैव क्लैरिटी दैट KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में कब बात होगी. वी एक्सपेक्ट व्हेन द प्रेसिडेंट इज अराइविंग इन इंडिया द डिस्कशन कैन गो एंड रिगार्डिंग दिस ऑल्सो. Now, intergovernmental agreement की बात की गई. 2 country would sign the agreement in February 2019, and there is a joint venture जहाँ पे इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड स्टैब्लिश की गई थी इन कोरवा इन उत्तर प्रदेश, राइट? एंड द जॉइंट वेंचर इज बिटवीन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फ्रॉम इंडियन साइड एंड रोप्सन एक्सपोर्ट दैट इज फ्रॉम द रशियन साइड. एयरफोर्स सैटेलाइट की अगर बात करें, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रोक्योरमेंट की बात कही है GSAT 7C कम्युनिकेशन सैटेलाइट की फॉर इंडियन एयरफोर्स at the cost of 2,236 crore. This amount is not important. This is just to tell you कि क्या चल रहा है ट्रेंड. Inductions of GSAT 76 satellite and the grounded hub for the software defined radios, it will enhance the ability of the armed forces communications beyond the line of sight among the other circumstances in secure mode. Now, panel setup for the community kitchen, which is again very important topic for your general studies paper 4 also. Supreme Court ने intervene किया है, उसके बाद government ने इस पे committees भी बनाई. We'll see that also, right? So recent Supreme Court interventions with community kitchen, जहाँ पे यूनियन जो फूड मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया है कि 8 स्टेट के सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ मीटिंग की गई है, एंड 8 स्टेट वुड बी फॉर्मिंग देयर ओन कम्युनिटी किचन्स, राइट? So this would be headed by the food secretary, जहाँ पे मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, बिहार और वेस्ट बंगाल के फूड सेक्रेटरी होंगे. So the ministry said that the new community kitchen scheme is indeed needed, और ये सिंपल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी. इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हाईलाइट किए गए हैं. That the main gist for this community kitchen would be they would ensure quality, they would ensure hygiene, reliability, and the spirit of services for the common people. Now, the Apex Court has recently asked the center to come up with some policy decision concerning the implementation of community kitchens, right? जहाँ पे कोर्ट ने already सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था why can't we have the community kitchen, right? Because Supreme Court in its report, in its verdict has said कि welfare state के लिए सबसे important ये है कि वो निश्चित करें, they should ensure that every individual who should not be dying of hunger. So it is a state responsibility that they should provide food. Now, the Supreme Court has provided a 3-week deadline to the government. Now, community kitchen by the state. So there are several state government that provide meals to their citizens at highly subsidized rate. यहाँ पे prices बहुत ज़्यादा नहीं होते. It vary from 10 rupees to 20 rupees. This is a subsidized rate which they get meal for a day. So कुछ और states में जो इस तरह की चीज़ें फंक्शन कर रही है, that include तमिलनाडु, अम्मा किचन्स, राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई, कर्नाटका में इंदिरा कैंटीन, दिल्ली में आम आदमी कैंटीन, आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात, and Odisha में आहार सेंटर. So these are some of the already functional community kitchen that is being operated by different state government. Some concern were raised regarding the death in the country during the pandemic, और उसके लिए डेटा अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों की सिर्फ हंगर की वजह से डेथ हुई है. So Food and Agriculture Report 2017-18 basically has stated that 195.9 million and 821 million undernourished people are there in the world.
This account for approximately 24% of the world hunger from India. You can see that this is large number. And prevalence of undernourishment in India is 14.8, higher than both the global and Asian average, right? So this was the end of this FCA 2. We have a lot more other initiative for you in our YouTube. You can watch daily news, editorial analysis, IS Gazette and magazine is there, FCA, PIB, MPR, Gist of Yojana and Kurukshetra. This all initiative would help you to sail through this journey of civil services. So do check it out. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.